वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 1 ऑफ माय मास्टर कोर्स। उसमें हमने किया था सिंपल सटल सिख ब्राइडल लुक, मॉर्निंग ब्राइडल लुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ हर फेस क्लीन। अब मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ टोनर। जस्ट यू नीड टू स्प्रे इट. Now I'm applying a face eye base, eye makeup base that is from NARS. शेड है जिंजर और मैं अप्लाई कर रही हूँ. पैक का ब्रश है, फ्लैट ब्रश है ये, कंसीलर ब्रश. नेक्स्ट आई एम ब्लेंडिंग इट विथ अ बफिंग ब्रश, सेटिंग इट विथ इट. मुझे लगा कि थोड़ा सा और नीड है, तो नाउ आई एम टेकिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड जस्ट डैबिंग इट. मैंने यूज़ किया है प्लूम का ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि मेरा फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर है. नाउ आई एम यूजिंग लूज पाउडर फ्रॉम Forever 52 and I am creating a transition shade with a nude shade eyeshadow which is from Morphe Jaclyn Hill palette. और मैं एक ट्रांजिशन शेड क्रिएट कर रही हूँ उनकी क्रीज लाइन एरिया में, ताकि और आज हम बहुत डे वेयर सटल लुक कर रहे हैं. अब हम उससे थोड़ा सा डार्कर टोन में जा रहे हैं. अगेन वी आर क्रिएटिंग अ ट्रांजिशन शेड, ब्लेंडिंग इट वेल. नेक्स्ट आई एम टेकिंग a little more darker shade and applying it on the crease line. और अच्छे से blend करना है हमें. बहुत easy होता है, blending बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर आपकी blending अच्छी नहीं है तो फिर आपका आई मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा. नेक्स्ट मैं थोड़ा सा और डार्कर शेड ले रही हूँ एंड मैं ले रही हूँ एक फ्लफ़ी ब्रश और उससे ही ब्लेंड करूँगी, ब्लेंडिंग इट वेल अपवर्ड मोशन के लिए, ताकि आईज थोड़ी बड़ी लगें. Now I am taking a little more darker shade and blending it well. Again blend blend blend. Crease line area में एक transition shade बनाया है मैंने. Also guys, I do give master classes. अगर आपको और क्लास मेरी enroll करनी है, so you can DM us, you can follow us on Insta. Also you can call on the given number. मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी इफ़ यू वांट टू इनरोल इन माय मास्टर कोर्स. थोड़ा सा मैंने डार्क ब्राउन कलर लेकर एक आईलाइनर की तरह उसे लगाया है. नाउ इन द सेंटर आई एम अप्लाइंग अ लाइट ऑफ वाइट कलर आई शैडो. थोड़ा सा शीन है उसमें, सेम पैलेट में से, एंड उनको सेंटर में लगाते हुए आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट. नाउ आई एम टेकिंग अ वेरी लाइट पिंकिश सा शेड, क्योंकि इनके आउटफिट में थोड़ा सा पिंक था, तो मैं फिंगर टिप्स से अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंडिंग इट वेल. अगेन आई एम टेकिंग लिटिल मोर ब्राउन शेड एंड जस्ट क्रिएटिंग अ क्रीज लाइन, कर्व बना रही हूँ थोड़ा सा मैं. नाउ आई एम यूजिंग अ लाइनर, स्मॉल एंगुलर ब्रश, उससे मैं एक लाइन पतली सी बना रही हूँ लाइनर लगाते हुए, जेल आई लाइनर, एंड उसको ब्लेंड करेंगे हम. बस एक लैश लाइन पे ही हमने लगाना है. नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट वेल. Now I'm smudging it with the black eyeshadow. थोड़ा सा डेप्थ लाने के लिए we are just applying it. Now I'm applying Makeup Studio का glue. दोनों eyelids पे अच्छे से blend करना है, हमें set करना है. Now I'm applying shimmer Forever 52 का, जो कि ट्रांसपेरेंट शिमर है, थोड़ा सा होलोग्राफिक लुक है इसकी. Now we'll be applying very light lashes. Setting it with the liner brush.
नाउ आई एम क्लीनिंग इट। और उनके अंडर आइज से मैं जितना फॉल आउट हुआ है सारा मैं क्लीन कर रही हूँ। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट टू डू आई मेकअप फर्स्ट देन अप्लाई ऑन योर फेस बेस। Next, I'm applying face oil. Next, I'm applying Embrolis की cream. And I'm using Smashbox का concealer primer. Sorry. जहाँ पे भी आपको लगता है आपको रिंकल्स फाइन लाइंस हो सकती हैं आप वहाँ पे अप्लाई करो। एंड अगर आपको लगता है स्किन में ओपन पोर्स हैं देन विल यूज़ बेनिफिट का प्राइमर। नाउ आई एम अप्लाइंग फॉरएवर 52 का ऑरेंज करेक्टर एंड विल जस्ट ब्लेंडिंग इट ऑल ओवर वेर एवर इट इज़ नीडेड। क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी सी टैन है तो मैं ऑरेंज करेक्टर ज़रूर लगाती हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डार्क कलर का करेक्टर बट आई प्रेफर यूजिंग ऑरेंज करेक्टर। Also guys, do let me know if you liking my videos, कैसी लगी आपको मेरी videos, and also follow me on Instagram, that is Glam Factory by Komal. Now I am taking bridal palette Krylon key and blending it well all over on her face. अब हमें एक इवन टोन बनाना है स्किन में इनकी। Now I'm blending it with the beauty blender. I'm using again the Plume का beauty blender. अब आप देख रहे हो एक प्लेन एक ड्यूई लुक आ चुका है इनके फेस पे। सारा स्किन इवन हो गया है, टैन भी नहीं लग रहा है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग डियोर की बैक स्टेज फाउंडेशन। फुल उनके फेस पे मैं अच्छे से लगा रही हूँ विद द फाउंडेशन ब्रश एंड ब्लेंडिंग इट वेल। Also on her neck, how can we forget that? Blend it well with the Plume beauty blender. Next I'm using मीडियम कलर कंसीलर क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है उनका जहाँ टैनिंग था वहाँ पे थोड़ा सा स्किन डार्क दिख सकती है। सो वी आर जस्ट अप्लाइंग अ मीडियम कलर कंसीलर ऑन हर फेस, ऑल्सो ऑन हर forehead. Gives an even tone on all over on her face. Now I'm using light neutral for highlighting her face under eyes पे।
T-zone एरिया पे, because it's a sick bridal look, so you need to do this. Blend it well with the Plume Beauty blender. Next I'm baking it with the loose powder from Forever 52, that is translucent powder, and setting her under eyes also. Smile lines also set करनी है अच्छे से. Next I'm applying Recode का काजल pencil, which is my favorite काजल. अंडर आइज हमें अच्छे से सेट करनी है with the brown eye shadow on it. ब्राउन एंड पर्पल आई शेडो के साथ हमें अच्छे से आईज सेट करनी है. इससे डेप्थ मिलती है आईज को और एनहांस लुक आता है. Now I'm taking out all the loose powder from her face and blending it well. बेक कर रही हूँ मैं, पूरे फेस पे सेट कर रही हूँ. बहुत ही मैट फ्लॉलेस इफेक्ट आ गया है फेस पर. Now it's time to contour, so I'm just creating a contour line from her face. Now I'm just blending the contour with the bronzer, fluffy flat angular brush से. फॉरहेड इनका थोड़ा सा, उसे भी मैं ब्रॉन्ज करूँगी. नोज एरिया पे विल जस्ट क्रिएट एन एंगुलर ब्रश से. Now I'm applying a lip balm to hydrate her lips. And my favorite part, eyebrows. Eyebrows के बिना look तो बिल्कुल incomplete रहती है. So I'm using L'Oreal की eyebrow palette, Brow Define palette. I'm creating a nice defined eyebrows. Blending it well. नेक्स्ट ऑल्सो ऑन हर अदर आईब्रो. थोड़ा सा मैंने इसमें पर्पल टिंट आई शेडो में दिया है कॉर्नर्स पे, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, टू गिव अ नाइस एनहांस लुक. नाउ आई एम यूजिंग लेन 4 का ब्लश. OMG, आई जस्ट लव दिस पिंक ब्लश. बहुत ही प्यारा इफेक्ट आता है इससे. उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मिलानी का ब्लश दे रही हूँ. Now I'm removing the lip balm and I will be applying a very nice neutral nude color. तो मैंने थोड़ा पर्पल कलर का Forever 52 का लिप कलर लिया है, एज अ लिप लाइनर लगवाया था, उसको ही स्प्रेड किया था. Now I'm applying Forever 52 की लिप पैलेट एंड उसी से मैं एक लाइन अच्छा सा मिक्स एंड मैच करके लिप कलर क्रिएट कर रही हूँ.
नेक्स्ट ऑन हर इनर कॉर्नर्स और ब्रो बोन पे मैं चारमेसी का शिमर लगा रही हूँ। ब्रो बोन एरिया पे भी एंड लिटिल बिट हाईलाइटिंग कर रही हूँ ब्रो बोन एरिया पे। आई एम यूजिंग मेबलिन का हाईलाइटर। ब्लश में यूज़ कर रही हूँ मैं हाईलाइटिंग के लिए अर्बन डिके का हाईलाइटर। बहुत ही माइल्ड सा हाईलाइटिंग देनी है मुझे। मेकअप फिक्स किया है मैंने मैक का प्रेप एंड प्राइम मेकअप फिक्स से। हेयर क्लीन करेंगे हम इनके, जो भी थोड़ा सा फाउंडेशन लगा है ऑब्वियसली। Also don't forget the mascara. I'm using Charmesi का mascara. How flawless look is it, guys? Let me know in the comment section आपको ये look कैसी लगी. Also do follow me on Instagram by Glam Factory by Komal. Oh my god, I'm just loving it. ये jewelry है सोनी jewels की, outfit है इंदु fashion चांदनी चौक, and हमारी gorgeous SIKH bride is ready. Thanks for watching.